Hello Mataji, and watching Hornbill TV's Prime Time. Soon after returning from his two-day visit to Bhutan on Wednesday, Prime Minister Narendra Modi visited Lok Nayak Jai Prakash Narayan LNJP hospital in the national capital to meet those injured in the recent Delhi blast. Upon landing in Delhi, Prime Minister Modi drove straight to LNJP hospital where he interacted with the injured and inquired about their health. He also wished them a speedy recovery. During his visit, the Prime Minister was briefed by senior officials and doctors about the condition of the victims and the treatment being provided. At least 8 people were killed near the Lal Quila metro station on Monday evening after a blast occurred in a Hyundai i20 car. According to sources, the initial post-mortem findings of the Delhi blast victims revealed severe injuries, including broken bones and head trauma. Blast wave damage affected lungs, ears, and abdominal organs, rupturing eardrums, lungs, and intestines. The blast was potent. The cause of death includes deep wounds and excessive bleeding, with cross-injury patterns indicating victims were thrown against walls or the ground. During the post-mortem examination, no splinter traces were found on the bodies or clothing. The type of explosive used will be determined by forensic analysts. Most injuries were concentrated on the upper body, head and chest. PM Modi is also set to chair the Cabinet Committee on Security meeting to discuss the Delhi blast. Opposition parties continue to demand Union Home Minister Amit Shah's resignation after the powerful car explosion near Delhi's Red Fort killed at least 12 people and injured several others. Uttar Pradesh Congress chief Ajay Rai said on Tuesday Shah is directly responsible for the tragedy and should step down. Echoing similar criticism, Karnataka Minister Priyank Kharge lashed out at the Union Home Minister, terming him the most incompetent Home Minister in independent India. Congress General Secretary Organization and MP KC Venugopal said in the last Parliament session that the Union Home Minister claimed that now no such terror attacks are happening in India. Unfortunately, the incident happened in the national capital itself. आने से नहीं होगा। आप कहते हैं ना कि कोई घुसपैठिया नहीं आ सकता, कोई घुसपैठ नहीं भी, कोई आतंक, कैसे घटनाएं घट रही हैं? ये घटना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पुलवामा में मारा, बच्चों को मारा, जो महीने 2 महीने 15-15 दिन की शादियां हुई थी, बेचारे वहाँ पर हनीमून पीरियड में गए थे, उन सबको मार डाला। उनकी पत्नियों के गोद में बच्चे, यहीं कानपुर का शुभम द्विवेदी बेचारा मार दिया गया, यहीं यूपी का मारा। तो मतलब पूरे समझ सकते हैं क्या हाल हो रखा है पूरे। उसके बाद भी आपने कहा हम सब ठीक कर देंगे। उसके पहले चुनाव के 2019 के चुनाव के पहले आप देख सकते हैं कि वहाँ पर घटना घटी पुलवामा में। क्या हुआ? उसकी कोई जांच अभी तक कुछ नहीं आई। आरडीएक्स कहाँ से आया? उसमें भी आरडीएक्स यूज हुआ था। उसमें एक अधिकारी भी पकड़ा गया था, देवेंद्र या क्या नाम था उसका, जम्मू कश्मीर का। कहाँ है उसका पता नहीं। फिर अभी आरडीएक्स आ गया। कैसे आ रहा है आरडीएक्स? आपके शासन सत्ता में और आप ताकतवर हो, आप कहते हो कि नहीं कुछ नहीं, कहीं हम एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और घुसपैठिए की बात आप रोज बोलते हैं गृह मंत्री जी, पर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। पूरा देश परेशान है, तबाह है, निर्दोष लोग मारे गए। अभी इस हत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा? सीधे सीधे जिम्मेदार अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। किसकी तरफ सारा जा रहा है आपका? फेलिवर है, सरकार की फेलिवर है, टोटल फेल है सरकार, गवर्नमेंट फेल है पूरी तरीके से। गृह मंत्री केवल चुनाव में व्यस्त रहते हैं। मैं था जिस होटल में मौर्या में, उस पटना में, गृह मंत्री उसमें टिके हुए थे। वो पूरी तरीके से लॉबी के कैमरे पर पूरा पेपर लपेटा हुआ था। और लिफ्ट के अंदर भी जो वहां पे कैमरे लगे थे, लिफ्ट के अंदर भी कैमरे को पूरी तरीके से उसको पेपर से ढककर उस पर सेलो टेप लगाया गया था। ये क्या है? ये पूरी तरीके से ये साजिश करने वाले लोग बैठे हैं। मुझे लगता है कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और इस तरह की जो आतंकवादी घटनाएं घटी हैं ये पूरे इनके रेजिम में, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि तह में अगर जानकारी करेंगे तो सारी सच्चाई आ जाएगी कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और कौन बड़ी बड़ी बात जो बोलने वाले लोग हैं, वही निश्चित तौर से सामने चीजें आ जाएंगी। तो गृह मंत्री इस्तीफा क्यों दे? फेलिवर किसका है? किसका फेल है? अभी आप देख सकते हैं पहलगाम की इतनी बड़ी घटना घटी, ऑपरेशन सिंदूर और क्या क्या बड़ी बड़ी लोगों ने कहा कार्रवाई, ट्रंप ने एक बार में घुड़की दी, सब काम खत्म हो गया, उसका जवाब नहीं दे पाए। अभी आप देख सकते हैं ये घटना घटी है दिल्ली राजधानी में हमारे,
देश की राजधानी में। कितनी शर्मनाक बात है पूरे पूरे देश के लिए। और निर्दोष लोग मारे गए बेचारे, उसमें निरीह लोग मारे गए। और प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, आज भूटान जा रहे हैं यात्रा पे। अरे भूटान की यात्रा ज़्यादा जरूरी है या हमारे देश के नागरिक ज़्यादा जरूरी है? हमारा देश जरूरी है। पहले हमारा देश रहेगा, हमारे लोग रहेंगे, हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे, उसके बाद हमारी पूछ होगी। पहले डटकर यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए थी। और निश्चित हो इसमें जो लोग इसमें साजिश में हैं उनको पूरी तरीके से उनको आप निकालिए और उनको पूरी तरीके से उनका पूरा पर्दाफाश करिए और कार्रवाई करिए। Certainly, in last Parliament session, our Honorable Home Minister claimed that there is no this type of terror attack is happening in India. That point of time itself, we told that don't take it as a light thing. Safety and security are utmost importance of this country. But unfortunately, the national capital itself, the unfortunate incident happened. We want a thorough inquiry on that because the people of India wish to know about the real reason for behind this. Government has to come forward with a strong inquiry system. 6 months after the Pahalgam attack. Yes. Certainly, you can see the track record. Basically, it is a clear security failure. National capital it is happening means it is a clear security failure. What is the moral responsibility of the Home Minister? Thank you. Fresh CCTV footage has captured the exact moment a powerful explosion ripped through a slow-moving car near the Red Fort metro station in Delhi on Monday evening. The 15-second clip retrieved from the area CCTV control room shows a congested stretch filled with vehicles when suddenly a massive ball of fire engulfs the scene, sending debris flying and gutting several vehicles nearby. The explosion, which occurred at 6:50 p.m., has so far claimed 12 lives and left several others injured. On November 10, a high-intensity explosion occurred in a slow-moving Hyundai i20 car at a traffic signal near the Red Fort metro station, killing at least 12 people and injuring around 20 others. The car explosion was directly linked to a major terror module uncovered in Faridabad. The Red Fort blast on a busy Monday evening came hours after 8 people, including 3 doctors, were arrested and 2,900 kgs of explosives seized with the uncovering of a white-collar terror module involved in the Jaish-e-Mohammed and Ansar Quzwat-ul-Hind and spanning Kashmir, Haryana and Uttar Pradesh. Police sources said that Dr. Umar was a member of a Jaish-e-Mohammed terrorist module, which also included Dr. Muzamil and Dr. Adil Ahmad Dar. Findings of the initial probe into the blast suggest it may have been accidentally triggered while a hastily assembled explosive device was being transported following the busting of an interstate terror module, officials said. Investigators have zeroed in on Pulwama-based Dr. Umar Nabi, who was driving the car used in the explosion and had alleged links to the terror module busted with the recovery of explosive mainly from neighboring Faridabad in Haryana. Sources said that the explosion was triggered in a panic and desperation after raids by the security agencies across multiple locations in Delhi, NCR and Pulwama, Jammu and Kashmir to nab suspects believed to be a part of the terror module. The International Olympic Committee is reportedly getting closer to put a blanket ban on transgenders to take part in women's sport. Multiple reports say the IOC is weighing universal rules for transgender athletes at the Games as a growing number of sports bodies move to tighten eligibility criteria in a shift in sentiment that the IOC appears increasingly willing to get on board with. The IOC under new President Christy Coventry did a U-turn in June, deciding to take lead in setting eligibility criteria for Olympics participation on transgender athletes, having previously handed responsibility to the individual sports federations, leading to a confusing patchwork of different approaches. In September, Coventry set up the Protection of the Female Category Working Group, made up an expert as well as representatives of international federation to look into how best to protect the female category in sports. Before Coventry decision in June, the IOC had long refused to apply any universal rule on transgender participation for the Games, instructing
international federations in 2021 to come up with their own guidelines. Under current rules still in force, transgender athletes are eligible to take part in the Olympics. US President Donald Trump has signed the Keeping Men Out of Women's Sports order in February, has said he would not allow transgender athletes to compete at the 2028 Los Angeles Summer Olympics. Following Trump's decision, the United States Olympic and Paralympic Committee also changed its rules accordingly, banning transgender athletes from taking part in women's sports. We'll take a short break. Keep watching. On the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए साए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। Welcome back. The Forensic Science Laboratory has collected the DNA samples of the mother of the suspect, Dr. Umar Nabi, who was allegedly driving the I-20 car in which the blast occurred near the Red Fort on November 10, killing 13 people and injuring several others, said sources on Wednesday. Her samples have been sent to the AIIMS Forensic Laboratory for further investigation, the sources added. According to Delhi police sources, suspect Umar was also seen with the I-20 on the Mumbai Expressway and the Kundli Maneswar Palwal KMP Expressway, after which he was heading towards Delhi. Investigating agencies are investigating the vehicle's movement. The sources added that after checking the footage on the vehicle's timeline, footage of his vehicle is emerging from various locations. Agencies are trying to determine whether any other vehicle was also accompanying his vehicle or not. Based on special intelligence, massive search and hunt operation is being carried out across Delhi, UP, Haryana to bust terror networks and nab suspects in Delhi blast case. In the series of busting terror modules, pre and post Delhi blast, one Dr. Sahin and Dr. Parvez, a sibling duo, have been detained from Lucknow. However, the family of Sahin and Parvez, who are reportedly under investigation in connection with the Delhi blast case, has come forward asserting their innocence. During the investigation, a medical practitioner, Dr. Adil, has also been apprehended from Saharanpur in Uttar Pradesh. Subsequently, Dr. Muzamil, a doctor from Al Falah Medical College in Faridabad, has also been arrested for stocking nearly 3,000 kilograms of explosives. सब बता दिया आप लोग को। एक एक आदमी क्या बातचीत हुई है दादा? हमारे घर की तलाशी में बस, और घर की तलाशी में क्या क्या तलाशी? कुछ नहीं कुछ नहीं नीचे करो, कुछ नहीं भाई जी। आपके कितने बच्चे हैं? सुनिए, आप कितने बच्चे हैं आपके? आपके मीडिया वालों को हम सब बता चुके हैं। अरे वो मीडिया गई, वो मीडिया गई, उससे हम नहीं बताएंगे। हम बार बार नहीं बताएंगे, एक बार और नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। आप कोर्ट से ऑर्डर ले आइए तो भी नहीं बताएंगे। क्या बात हुई? क्या बात हुई? अभी क्या बात हुई? कुछ नहीं कहना है। अभी क्या बात हुई? हमें कुछ कहना ही नहीं है। अभी आई थी जो टीम, क्या बात थी? अरे अपनी सफाई में कुछ तो रखिए। हमारी सफाई हमारा दिल है, बस आप मेरे दिल की बात नहीं जानते। कुछ तो बोलिए अपनी सफाई में।
आईडी उधर करो, थोड़ा सब कुछ बता चुके हैं, क्या बताना था? क्या खराब कर रहे हैं यार? आईडी दिखी नहीं रही है, हम तुम्हें अरे एक बयान दे दीजिए। हम क्यों बयान एक बयान का मतलब अपनी बात एक। आप लोग कितने लोग हो? हम लोग हैं लगभग जितने सभी लोग हैं। अब एक बार बोल दीजिए, बताओ पहले। सुनिए, एक बार में बोल दीजिए बस, एक बार क्यों बोलिए? पहले आपने आदमियों को गिनो, भैया गौरव भैया फोन मीडिया वालों गिनो। सुनिए तो एक बार बोल दीजिए। मीडिया गिने पहले। अरे भाई जब तुम आईडी इतनी दूरी है कैसे दिखा लोगे? कैमरा लगा हुआ हेड पे। एक बार आप बोल दीजिए, एक बार। सर ये बताइए क्या बात हुई? आपकी बातचीत क्या? कोई बात नहीं हुई सर, क्योंकि जो करना था किया हमारी टीम से बात। आपके कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे क्या? देखिए, ये जानकारी में आया है कि डॉक्टर शाहीन यहाँ पर जीएस विम कॉलेज में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्होंने प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे काम किया है, पढ़ाया है बच्चों को। और उस दौरान उनकी जो एक्टिविटीज़ रही हैं उसको क्या रही हैं, कहाँ कहाँ वो जाती थी, किससे किससे बात करती थी, और इस संबंध में हम लोगों ने जानकारी एकत्र करनी चाहिए वहाँ पे कॉलेज में भी की है। इसके अलावा जो नाम हम लोग को संदिग्ध थे पूर्व में दंगों वगैरह में इनके जिनके नाम आए थे, उनको लोगों को खंगाला जा रहा है कि वो किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इनका आतंकवादी कनेक्शन हो। तो इसलिए 9 लोगों को अभी फिलहाल जानकारी के अनुसार उठाया गया है, पूछताछ करके बाद छोड़ दिया जाएगा। अगर उनका कुछ जानकारियाँ मिलती हैं तो वो एजेंसी जो हमारी लगी उनको बताया जाएगा, वो गोपनीय जानकारी है। सर, जिस तरह से शाहीन कानपुर मेडिकल कॉलेज से उसका संबंध निकल के आया है, क्या इस एंगल पर भी जांच हो रही है कि क्या वो कानपुर में रहते हुए किसी ऐसे संगठन से जुड़ी हो या जो सस्पेक्टेड हो आपके इसमें लिस्ट में, क्या उस एंगल पे भी आप लोग जांच कर रहे हैं और कहाँ तक कुछ सामने आया है? जी बिल्कुल, वो हमारे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं और उनके बारे में इस तरह की समस्त जानकारियाँ, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो बैंड जो ऑर्गेनाइजेशन है जैश ए मोहम्मद, उसकी फीमेल विंग की लीडर थी या जो भी बताया जा रहा है, तमाम बातें न्यूज़पेपर्स में आ रही। तो सबको वेरीफाई करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम डीप में जाकर के जानकारियाँ प्राप्त करें। सर, एक जो शाहीन के पति हैं अयाज जफर, जो यहाँ पे भी डॉक्टर हैं, नेत्र सर्जन है, क्या उनसे भी कुछ आप लोग बातचीत करेंगे या बातचीत किया है? नहीं, उनसे बातचीत की गई है, करी जा रही है। और अभी तो उन्होंने डिनाई किया कि मेरा उनसे डिवोर्स हो चुका है, बट अभी वो हमारे शक के दायरे में है और उनसे पूछताछ हम लोग जारी रखेंगे। सर, एक लास्ट, जो 9 लोग सस्पेक्टेड पकड़े गए हैं, अभी तक क्या कुछ सामने आया है उनसे? हमारी टीम्स उनसे इंट्रोगेशन कर रही हैं और अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं प्राप्त हुई जिसका कि कोई सीधा कनेक्शन होता हो। लेकिन अब जो मैंने बताया कि जो डिटेल्स आएंगी, जो सीक्रेट टाइप की होंगी, वो हम एजेंसीज के साथ शेयर करेंगे। मीडिया पे नहीं बताई जा सकती बातें, लेकिन हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं। सस्पेक्टेड पकड़े गए हैं, अभी तक क्या कुछ सामने आया है उनसे? हमारी टीम्स उनसे इंट्रोगेशन कर रही हैं और अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं प्राप्त हुई जिसका कि कोई सीधा कनेक्शन होता हो। लेकिन अब जो मैंने बताया कि जो डिटेल्स आएंगी, जो सीक्रेट टाइप की होंगी, वो हम एजेंसीज के साथ शेयर करेंगे। मीडिया पे नहीं बताई जा सकती बातें, लेकिन हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं। We'll take another short break. Keep watching. Join us every month on Health Talks on Hornbill TV, your trusted health show, bringing you expert insights from top doctors, updates on treatments, and wellness tips for a better, healthier life. From lifestyle diseases to mental health, we cover it all because your health matters. Only on Hornbill TV. Welcome back.
Tragedy struck when a Turkish military cargo plane crashed in Georgia, killing all 20 personnel on board. The announcement came from Turkey's defense minister on Wednesday, confirming the loss of the C-130 plane, which has departed from Ganja, Azerbaijan. The aircraft was on its way back to Turkey but crashed in Georgia's Singnagi municipality. The cause remains under investigation as the Turkish accident investigation team has joined forces with Georgian authorities to inspect the wreckage scattered across the plain near the border. Expressions of sympathy has flooded in from global leaders including NATO and the US. The crash coincided with recent Victory Day celebrations in Baku, but it's unclear if the personnel were attendees. Funeral arrangements have yet to be disclosed. A purported video clip of the crash surfaced on social media platform X. The unconfirmed footage purportedly shows the aircraft spiraling from the sky amidst white smoke. A separate sizable object from likely emanating from the aircraft can be seen falling towards the ground at distance. In an X post, OSI anti-defender said 20 service members with the Turkish armed forces were killed early today after a C-130E Hercules on a regular scheduled flight between Ganja International Airport and Azerbaijan and Turkey appeared to break apart mid-air and crash over southeastern Georgia, roughly 3 miles from the border with Azerbaijan. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV. Good night.